See here, today we will discuss about the spherical mirror. See here, what is a spherical mirror? A spherical mirror is mirror which is a part of a sphere. If a mirror we have polished that such that it is a part of a spherical glass, then it is called spherical mirror. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass, that is called spherical mirror. Actually, spherical mirror are two type. One is what? Concave mirror, another is convex mirror. So what is concave mirror? It is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface. Here you can see I have made that is concave mirror. Here inner is the reflecting surface. Outer surface we have silvered coating with protected by paint. Outer surface we have coated. Inner surface is reflecting or concave surface is reflecting. Then it is called concave mirror. If I have done such that inner surface we have silver coated and protected by paint, outer surface or you can say bulging out surface is reflecting surface, so that is convex mirror. What is convex mirror? Convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface. If reflection of light taking from the convex surface or outer surface, so that is called convex mirror. So we are going to study about the spherical mirror. हम लोग spherical mirror के बारे में जा रहे हैं बेटा. Spherical mirror क्या होता है बेटा? अगर कोई sphere है, spherical glass, and we have taken a part of spherical glass and we have coated, we can coat inner side or outer side. अगर हम outer side coat करते हैं तो inner surface जो है वो reflecting हुआ, तो उसे हम क्या करते हैं बेटा? concave. अगर हमने ऐसा कोटेशन किया, ठीक है, जो सिल्वर कोटिंग की वो हमने क्या इनर साइड की, आउटर को हमने क्या किया बनाया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो उसका नाम हमने क्या रखा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर. तो टू टाइप ऑफ मिरर. अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ दे विल फॉर्म द इमेज, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस, ऑल द थिंग्स. हियर we are going to discuss about the center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis, aperture. Actually, what is center of curvature? See here, it is center of hollow sphere of glass of which the mirror is a part. What we know, spherical mirror is a part of a spherical glass. The center of that spherical glass is known as what? Center of curvature. So see here, suppose this is the concave mirror. This is concave mirror. So this is a part of sphere. So this center of this sphere is known as center of curvature. तो बहुत important बेटा, center of curvature. Here you can see this is the center of curvature. Here we have taken convex mirror. So center of curvature. Here you can see center of curvature in the front of mirror. Here you can see this is the front, this is back side. The here center of curvature is back side from the mirror. Next is what is radius of curvature. What is radius of curvature? It is the radius of hollow sphere of glass of which the mirror is a part. Same thing, mirror is part of this glass sphere. The radius of this glass sphere, radius of this glass sphere will be the this is radius. The radius of glass sphere is radius of curvature. Here you can see this will be the radius of curvature. This length is radius of curvature. So what is radius of curvature? It is the radius of hollow sphere. hollow sphere का जो radius होगा वही क्या होगा बेटा? इस कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज पोल. द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस इज द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द स्फेरिकल मिरर. द सेंटर ऑफ दिस इज द सेंटर. तो दिस इज पोल. पोल, व्हाट इज पोल? पोल इज द center.
center of mirror. Here center of mirror is this point. So this is the pole. You can say center of reflecting surface is pole. The pole क्या है बेटा? Center of spherical mirror is called as pole. One thing more. If you are joining this center of curvature and pole, so this line, center of curvature and pole, you are joining. Here also you are joining center of curvature and pole. This line, this is called as principal axis. So this line is known as principal axis. So what is principal axis? Principal axis is the line joining the straight line passing through center of curvature and the pole of mirror is called principal axis. Here you can say this is the principal axis. What is principal axis? The line joining center of curvature and pole is known as principal axis. In other terms also we can show what is principal axis. The mirror is symmetrical about a line, both sides symmetrical, so that line is known as क्या? Principal axis. एक लाइन ऐसी होती है बेटा कि मिरर दोनों तरफ क्या होता है बेटा? सिमेट्रिकल होता है उस लाइन के, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अच्छा, एक मोर थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. एपर्चर. एपर्चर का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ ए मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर. जिस पोर्शन से लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्टर. ये 3 डायमेंशनल हुआ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूँ बेटा ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये अभी 1 डायमेंशनल यहाँ पर हमें दिख रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा. तो 3 डायमेंशनली जिन पार्ट से द पोर्शन फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा? एपर्चर. ठीक है. 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा एपर्चर के बारे में नहीं बताया जाता, बट यू नो एक्चुअल में ड्यू टू एपर्चर इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम और क्लियर पिक्चर या क्लियर इमेज विल बी फॉर्म. ठीक है. तो एपर्चर के हिसाब से जो है वो लाइट की इंटेंसिटी या हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा उसकी क्लियरिटी किस पर डिपेंड करती है? एपर्चर पर. अगर ग्रेटर एपर्चर है तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी ब्राइट और यू कैन से हैं वहाँ पर अच्छी होगी. अगर एपर्चर आपका कम है, ठीक है, भले रेडियस पोल सभी सेम है, तो आपका क्या होगा बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी? फ्यू होगी, या हम कह सकते हैं वो ब्राइट ना हो करके कैसा होगा बेटा? ब्लर टाइप आर यू कैन से हैं इंटेंसिटी जो है इट इज़ नॉट गुड. तो these are the terms I have explained: center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis and aperture. Here we are going to discuss about the principal focus. What is principal focus? Principal focus is the point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis, principal axis, converge after reflection or appears to diverge after being reflected. See here, if a close light coming from infinite or source, after reflection they are diverging at a point on the principal axis, so this point is called principal focus. So see here, this F is principal focus. After reflection they are converging at a point on principal axis or appearance is there. If you'll see in concave mirror, so really they are intersecting at a point, but when you will see here after reflection what have happened? They are diverging. It seems at appearing that they are coming from a point. They are coming from a point after reflection. The parallel rays coming to principal axis. Appearance is there. They are coming from a point. That point is called principal focus. बहुत important है कि अगर कोई रेज
close to the principal axis, parallel they are coming, parallel to principal axis. After reflection, they are passing through a point on the principal axis. Principal axis पर एक point है जहां पर वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं. तो ये जो point है principal axis पर जहां पर वो पास हो रहे हैं, ठीक है, that is called, क्या कहलाता है बेटा, principal focus. या कभी कभी ऐसा होगा in convex mirror, ठीक है, they are diverging. There is a appearance that all diverges ray after reflection they are coming from a point. Appearance is there, ठीक है, तो that point is known as, क्या कहलाता है बेटा, principal focus. आप ऐसे भी कर सकते हो, you can say here principal focus is real, here principal focus is virtual, here appearance is there, here after reflection they are passing through a point on principal axis, so this is called principal focus. ठीक है. अच्छा, one thing more, what is focal length? Focal length is the length between focus and pole. Principal focus and pole के बीच का जो distance होगा from here to here, you can say यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, focal length. So this is focal length. Here also we can see this is the focal length. यहाँ पर ये आपका क्या है बेटा, focal length. Focal length, the distance between focus and pole. What is focal length? The distance between principal focus, the distance between principal focus and pole is called focal length. इसे हम क्या कहते हैं बेटा, focal length. And one thing more, what is the relation between radius of curvature and focus? तो what we have seen geometrically we can prove. अभी यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में प्रूफिंग नहीं है इसकी, कि geometrically we can prove this f is midpoint of CP. ठीक है, ये f जो है मिड पॉइंट होता है किसका बेटा, CP का. तो हम क्या कहेंगे बेटा कि ये प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या रिलेशन होता है बेटा, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. यू कैन सी हियर बाय ज्योमेट्री वी कैन प्रूव फोकल लेंथ इज इक्वल टू, क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2. तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सी वन थिंग मोर, दैट शुड बी क्लोज. बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्फेरिकल एब्रीवेशन वगैरह, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा, जो डिस्टेंस फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, इफ यू हैव टेकन पैरेलल लाइंस extremely as large distance from the principal axis, so they will not converge at the same point. There are some spherical abbreviations. तो इसलिए हमने क्या कहा बेटा, कैसे होने चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हों, उन्हीं लाइंस को लीजिए तो दैट विल बी बेटर. ठीक है, तो इफ ए लाइन रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, they are converging at a point or they appears to be converge at a point, that is called principal focus. तो यहाँ आपको रियल मिलेगा, यहाँ आपको वर्चुअल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें क्या होता है बेटा, ऐसा महसूस होता है कि they are coming from through a point या from a point, तो that is called principal focus. अच्छा, focal length, the distance between focus and pole is called, क्या कहलाता है बेटा, focal length. और एक रिलेशन होता है, यहाँ पर प्रूफिंग नहीं है, हम प्रूफ कर सकते हैं इसे ज्योमेट्रिकली, कि फोकल लेंथ जो है हाफ ऑफ द क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर.